Hello everyone. In previous lecture we have discussed the numerical of value added method. Now in this lecture we will discuss some comprehensive question जिसमें एक से ज़्यादा मेथड से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को होगा बाय इनकम बाय एक्सपेंडिचर एज वेल एज बाय द वैल्यू एडेड मेथड। आपको सबका फॉर्मेट सबके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है और इसके ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वन बाय वन वो लेक्चर्स देखें क्योंकि उसके बिना आपको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे। फाइन, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एज वेल एज बाय एक्सपेंडिचर मेथड। फाइन, final consumption expenditure is given private sector, government sector. This is the constituent of the expenditure method. Mixed income of self-employed is given, gross domestic fixed capital formation, opening inventory, compensation of employees, closing inventory, imports, rent, consumption of fixed capital, net indirect taxes, interest, net factor income from abroad, exports and profit. So first we will calculate national income by income method, then we will calculate it by the expenditure method. So हमारे इनकम मेथड में अवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज ए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहले लेंगे एंड इन दिस डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 250 करोड़ इज ऑलरेडी गिवन। बी ऑपरेटिंग सरप्लस, we will consider the operating surplus and we know in operating surplus we have four constituents, that is rent, royalty, interest and profit. So in this profit is given rupees 100, profit 100 rupees given है. Number two, interest is given rupees 25, interest 25 is given. Number three, after interest we have rent of rupees 75, 75 rent is given. रॉयल्टी इन केस गिवन होगी तो वो भी ऐड कर लेंगे। सिंस नो रॉयल्टी इज गिवन सो दिस वैल्यू इज निल, तो दिस इज 200 करोड़। सी होता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वी विल टेक द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज रुपीज 35। इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल रीच टू द NDPAT-FC, नेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं इनसे। NDPAT-FC is 485 crores. NDPAT-FC से we have to reach to the NPAT-FC, N से N पर आना है, no change will be there. DP से FC पर आना है, we have to add the value of NFIA and deduct the value of, बस that's it. हमें NPAT-FC पर आना है तो इसको हम ऐड कर देंगे। NFIA is given rupees, net factor income from abroad is -5. So national income is rupees 480 crores. So this is the national income calculated by using income method. Now expenditure method. Now expenditure method से हम national income calculate करेंगे। A constituent is final consumption expenditure. Fine. Final consumption expenditure में we have private final consumption expenditure and two government final consumption expenditure. दोनों का हम ले लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इज रुपीज 350, गवर्नमेंट इज रुपीज 100, इन ऑल टोटल इज 450 करोड़। ओके फाइन। नाउ बी, बी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फर्स्ट वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक fixed capital formation. Gross domestic fixed capital formation is given rupees 70 crores. Number two, changes in inventory. Inventory में क्या change है? इसका formula है closing inventory minus opening inventory. Opening stock is given 15, closing stock is given 25. So 25 minus 15 is 10. Total value is 8. हाँ, third constituent is remaining net exports. थर्ड हम लेते हैं इसमें नेट एक्सपोर्ट्स, फॉर्मूला फॉर विच इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स इज गिवन 10, इम्पोर्ट्स इज गिवन 20। तो एक्सपोर्ट्स इज 10 एंड इम्पोर्ट इज 20, तो -10 विल बी द आंसर। तो आंसर विल बी 450 प्लस 80 माइनस 10 इज 520 इज द अमाउंट ऑफ GDP एट MP। इसमें से वी विल डिडक्ट द डिप्रिसिएशन फर्स्ट, which is rupees, depreciation is rupees 10, and we will add NFIA
but NFIA negative is given, so we will deduct it and then we will less NIT. NIT है indirect taxes is 25 and अच्छा net indirect taxes already given at 25, तो negative 25. So 520 minus 10 minus 5 minus 25 is 480 crore. That is our NNP at FC. 480 crores, and by income method it is 480 crores. Fine. Next question. Calculate NNP at FC by income and output method. Now we have to calculate the NNP national income by income and output means value added method. Items are given value of output of primary sector, value of output of other sectors, value of raw material of primary sectors and raw material of other sectors means both secondary as well as tertiary. Factor income received from rest of the world, factor income paid to the rest of the world, depreciation, indirect taxes, subsidies, and after that we have mixed income of the self-employed or compensation of employees. After compensation we have rent, interest and profit. Fine. तो पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए पॉइंट इज GVA बाय प्राइमरी सेक्टर. किसका लेंगे हम? प्राइमरी सेक्टर का GVA लेंगे एंड फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज 1000 crores and value of intermediate consumption raw material used is 500. So gross value added by primary sector is 500. B इसमें directly दे रखा है gross value added by other sectors. Other sectors means secondary as well as tertiary. Value of output minus intermediate consumption. So value of output is 400 and intermediate consumption is 300. Outer column में amount 100. 500 plus 100 is 600 is our GVA at MP. From GVA at MP we have to reach to the NNP at FC. So first we will deduct the value of depreciation, add the value of NFIA and deduct the value of net indirect taxes. Value of depreciation is given rupees 55. और NFIA factor income received from rest of the world 10 and factor income paid is 15. So 10 minus 15 is minus 5. Net indirect taxes 100, subsidies 20. 100 minus 20 resultant value is 80. So our national income is 460 crore. That is represented by NNP at FC. Now we will calculate the national income by इनकम मैथड. तो अब हमें इनकम मैथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. फर्स्ट फैक्टर इज ए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सबसे पहले हम लेंगे इसमें COE. ये हमारा बाय इनकम मैथड. तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज रुपीज 170 crore. B is the operating surplus, and in operating surplus we have different constituents: A rent, B royalty, C interest, and D is the profit. So rent given is rupees 40, royalty is not given, interest 30 and this is 25. 95 is the total amount. C factor is the mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed is given rupees 200 crores. So our NDP at FC is 465 crores. Then we just have to add only NFIA. Net factor income from abroad is -5. Final answer is 460 crore. That is NNP at FC. Next question is calculate national income by expenditure and output method. Now we have to calculate national income by expenditure method and the value added method. Gross domestic capital formation, net exports, private final consumption, expenditure, value of output of primary sector, value of output of secondary sector, value of output of tertiary sector, value of intermediate consumption of primary sector,
secondary and tertiary sector, consumption of fixed capital, indirect taxes, government final consumption expenditure, subsidies and net factor income from abroad is given. तो पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर लें, तो लिखेंगे हम इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड इज ए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब इसमें दोनों का आता है, नंबर 1 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये दो हैं. तो इसमें फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 is given and government final consumption is rupees 100 is given. ये 100 है and this is 1000. Total 1100 crores is given. Now in B we have gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation में we have two constituents, gross domestic fixed capital formation and changes in inventory. But already यहाँ पर gross domestic capital formation दे रखा है, तो उसके individual component से हमें कोई मतलब है भी नहीं. हमें उसको चाहे तो लिखें, चलो नहीं इसमें. Third is the net exports. Third value is the net exports, which is X minus M, export minus import. In this, net export is already given rupees 50 negative. हमारा GDP at MP is rupees 1300 crores. फिर उसमें से हम डिडक्ट करेंगे depreciation. NNP at FC तक आना है तो ऐड करेंगे NFIA and then we will deduct the value of net indirect taxes. Depreciation is rupees 80. 80 will be deducted. NFIA 20 rupees negative is given, and NIT net indirect taxes 100 minus 10. 100 is the indirect tax. Tax is 90 rupees will be the net indirect tax. 1300 minus 80 minus 20 minus 90 is 1110 is our NNP at FC net national product at factor cost. ये तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से. अब बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो हम सबसे पहले लेंगे ए ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड है, कैसे लेते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट by primary sector is rupees 1900 and intermediate consumption by primary sector is 400. तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 500. बी ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, इसमें भी वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दिस, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर इज 800 and its intermediate consumption is rupees 300. So value in outer column is 500 again. C gross value added by tertiary sector. Tertiary sector में value of output minus what, intermediate consumption. Value of output by tertiary sector is 400 crores and its intermediate consumption is 100 crores. Answer is 300. So total answer is 1300 crore is the value of GVA at MP. Now from GVA at MP we have to reach to the NNP at FC. तो इसको भी हम GDP at MP भी बोल सकते हैं. Less what depreciation और add NFIA और less what NIT. देखिए इसका भी 1300 करोड़ था, 1300 करोड़ वही है, लेस करना है 80 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़. फाइनल वैल्यू विल बी 1110. दिस इज अवर NNP एट FC. सो बेसिकली हमने तीनों के कॉम्बिनेशंस पढ़े. वन न्यूमेरिकल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, वन न्यूमेरिकल ऑफ इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड एंड वन न्यूमेरिकल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड. बिसाइड्स बहुत रेंज है इसकी, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं. इन केस यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी और एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, आप जिस भी बुक से करें, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.